बिजली गड़बड़ हो गए तो उनके यहाँ जो कुछ प्रीति में सुनाई दे रहा है? देखिए तो नहीं सर। चेयर लेके आइए इधर। गुड मॉर्निंग। मेरा बताएगा
सब सीरियल में तो करेगा क्या कुछ दिन गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज का हमारा ये जो NEP 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो हम लोगों का ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है, जो हम लोगों ने सोचा था कि एक फॉर्मल होना चाहिए, तो डायरेक्टर मैम के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शेड्यूल किया है। बिकॉज ऑफ फ्यू इश्यूज ये ऑफलाइन हेलो, मुझे मेरी आवाज ऑडिबल है? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो वही मैं अभी बात कर रही थी, हमें डायरेक्टर मैम के निर्देशानुसार ये जो NEP 2020 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना था, तो हमने NCERT और RI भुवनेश्वर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे स्टेट के लिए वो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है उसमें हमें हेल्प करेंगे। तो हमें RI भुवनेश्वर से इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और RI भुवनेश्वर के जो प्रिंसिपल सर हैं प्रोफेसर PC अग्रवाल, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस वर्कशॉप के लिए, इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन के लिए हमें परमिशन दिया और अपने रिसोर्स पर्सन्स हमारे झारखंड के लिए दिए।
साथ ही साथ मैं हमारे जो डायरेक्टर मैम है उनका भी बहुत बहुत थैंक्स कर रही हूँ सो दैट कि हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर पाए। अब हमारे साथ हमारे JCRT के डिप्यूटी डायरेक्टर सर जुड़ चुके हैं, प्रदीप चौबे सर। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी फॉर्मल इनॉग्रेशन के साथ हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सर। थैंक यू प्रीति जी। तो आज हम लोगों ने काफी समय से यह प्रयास कर रहा था कि RI भुवनेश्वर के सौजन्य से जितने भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी राज्य शिक्षा सेवा के हैं, इन पदाधिकारियों का NEP पर मुख्य तौर पर उनका एक उन्मुखी कार्यक्रम रखा जाए। इसके आलोक में RI भुवनेश्वर के द्वारा इसमें सहमति दी गई। इसके आलोक में आज ये एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं RI भुवनेश्वर से जुड़े हमारे वरीय प्राध्यापक गण का इसमें स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबका मैं जोहार करता हूं और मुझे आशा है कि ये आपको एक फर्स्ट हैंड आइडिया आपको मिल जाएगा कि NEP में है क्या, NEP क्या कहता है और NEP के आलोक में हम लोगों को क्या क्या किए जाने हैं। आप सभी अवगत हैं कि हम लोग अभी जो NCF FS जो आया है, जो फाउंडेशनल स्टेज का जो आया है, उसके आलोक में हम लोग काम करेंगे, जिसमें जितने भी प्रतिभागी अभी इससे जुड़े हुए हैं उनकी एक अहम भूमिका होगी। मैं पुनः हमारे RI भुवनेश्वर के जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ओवर टू प्रीति जी। थैंक यू सर। हमारे साथ RI भुवनेश्वर से प्रोफेसर HK सेनापति सर जुड़े हैं। आई थिंक उनका इंट्रोडक्शन हमें देने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज हम सभी जानते हैं प्रोफेसर HK सेनापति का मोर देन 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ वो फॉर्मर डायरेक्टर NCERT भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल वो अपनी सेवा RI भुवनेश्वर में दे रहे हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और प्रोफेसर जुड़े हैं, प्रोफेसर BN पंडा सर। प्रोफेसर BN पंडा सर का भी इंट्रोडक्शन जस्ट इन ब्रीफ ही उनका भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ सर बताएंगे अपना जो इंटरेस्ट एरियाज के बारे में भी। तो सर का भी ऑलमोस्ट मोर देन 30 to 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। बहुत सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर हैं वो हमारे RI भुवनेश्वर में। तो हमने प्रोफेसर PC अग्रवाल सर को कहा था कि सर हमारे जो NEP का ओरिएंटेशन है उसके लिए हमें हमारे RI के जो बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमें थोड़ा एड्रेस करें। तो वी आर थैंकफुल टू RI भुवनेश्वर जिन्होंने हमें इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स के साथ ये मौका दिया कि वो हमें ओरिएंटेशन में हेल्प करेंगे। तो ओवर टू सबसे पहले प्रोफेसर BN पंडा सर। सर आप हमारा जो ये मैं ग्रुप बता दूं कि कौन कौन हमारे ग्रुप में है। यहाँ पे हमारे जितने भी REOs हैं, रेंज एजुकेशन ऑफिसर, साथ ही साथ जितने भी हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो है SDEO वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे डाइट के कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, साथ ही साथ SCRT के फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे, जो आगे के जो 2 से 2.5 घंटे हैं। सर ओवर टू यू सर। प्रोफेसर BN पंडा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार टू एवरीवन। ऑल द आपका रेस्पेक्टेड मैडम डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, all of you those who are participating। ये तो अभी 2 साल से ज्यादा हो गया, 2.5 years जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब डिक्लेयर हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से, वो 2.5 years होने वाला है। एनीवे, so you have taken initiative, so I am also grateful and thankful to all of you। मेरा साथी प्रोफेसर HK सेनापति जी भी है। विल बी डिस्कसिंग समथिंग बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट 65 पेजेस का है, इसमें दैट मीन्स अवेलेबल। मेरा ख्याल से जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे माइट हैव सीन इट, बट एनी हाउ वो 1-2 घंटा में इट इज डिफिकल्ट टू कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। हमको जो अच्छा लगे, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन सारी का पास में होना चाहिए, विल ट्राई टू गिव दैट आइडियाज। सो मेरा कहने का मतलब है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
1986 and POA 1992, इसका बहुत दिन का बाद में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केम इनटू फोर्स, लगभग 1986 एंड 2020 34 इयर्स का बाद में ये पॉलिसी आया। इन बिटवीन जो 86 एंड 2020 का लॉट ऑफ चेंजेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। अब बिकॉज हम लोग का एनसीटी नहीं था, 86 पॉलिसी बाद में आया, डीपीपी, एसएसए, आरएमएसए, रूसा, आरटी एक्ट and knowledge commission, so sustainable development goal, so lot of changes international level में and national level में हुआ है। Not only that, ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया एंड जो पढ़े भारत एंड बड़े भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज and a lot of changes have taken place. ये सब चीज it was not available in 1986 policy. So इसीलिए तो national education policy is one of the most important vibrant policy। ये हम लोग को नया दिशा दिखा रहे हैं, because world is rapidly changing in almost all the areas। टेक्नोलॉजिकल एरिया में हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए lot of that means changes are taking place in the society। that is why सारी का जिम्मेदारी है how to give high quality educational opportunity to everyone। ये very very important। that is why national education policy 2020 it is a India centered education system। so we have to give, इसमें जो पॉलिसी में इसको कैसे हम लोग how to implement it, the Indianized, Indian values, Indian system of education, indigenous education, values, culture, peace, ये सब का बारे में कैसे हम लोग इसको implement कर सकते हैं। That means how to become a global super power। इसका बारे में ये जो पॉलिसी में सब कुछ दिशा दिखाया। So इसीलिए जो 21st century, that means in India to address हम लोग का जो agenda for sustainable development and that how to achieve the equity and equality because in the society lot of people वो लोग अभी education मिल रहा है, हम लोग इनको नहीं दे पा रहे हैं, lot of problems are happening। so इसीलिए हम generally एक brief history हम दे रहा हूँ before coming to many things। so इसलिए it is a student centric policy and emphasis, जो एम्फासिस सर बता रहे थे, डेप्यूटी डायरेक्टर साहब बता रहे थे, दैट इज ए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बिकॉज ये जो पॉलिसी में 4 भाग हुआ है, स्कूल एजुकेशन इट इज 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, द फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग। हम लोग भी था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, नया चीज नहीं है, बट ये पॉलिसी में ज्यादा एम्फासिस दिया गया, इसका बारे में थोड़ा बताएंगे। देन फाउंडेशनल लिटरेसी, urgent and necessary prerequisite to learning। why we are giving emphasis foundational literacy and numeracy, ये क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसका बारे में भी emphasis दिया गया है। how to reduce dropout, how to have a universal access to education, इसका बारे में भी पॉलिसी में लिखा हुआ है। क्या स्कूल लेवल में क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या क्या पेडागोजी in schools, what type of जो नया pedagogy दिया गया है, learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging। so ये जो 4 वर्ड लिखा हुआ है, holistic, integrated, enjoying and that means enjoyable, ये कैसे pedagogy में इसको हम improvement कर सकते हैं, इसका बारे में भी पॉलिसी में very clear cut sharp focused idea दिया गया है। टीचर्स का बारे में, because what type of teachers we need and what they want to know, हम टीचर के लिए किस टाइप ऑफ टीचर बना सकते हैं, टीचर का नॉलेज बेस क्या होना चाहिए, टीचर करिकुलम, टीचर एजुकेशन का करिकुलम क्या होना चाहिए, टीचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होना चाहिए, टीचर को क्या प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। देन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल,
ये कोई ऐसे नहीं है जो हम लोग किसको छोड़ देंगे, किसको एग्जामिनेशन पार्ट पढ़ाएंगे। एवरीबॉडी शुड गेट ए लर्निंग फॉर ऑल, एवरीबॉडी शुड गेट एजुकेशन। अभी भी सोसाइटी में बहुत बच्चा एजुकेशन से दूर में है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। maybe what type of difficulties we are having, how to overcome, कैसे हम टीचर एंड टीचर एजुकेशन को एम्फासिस कर, बिकॉज यही जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ अस। हम जितना जिम्मेदारी है, आप लोगों के पास इतना जिम्मेदारी है। टीचर एंड टीचर एजुकेशन ये अच्छा चीज होगा तो होपफुली हम लोग ये पॉलिसी को एक्चुअल सेंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, ये भी आप लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, डेप्यूटी डायरेक्टर साहब है, बीआरसीसी है, सीआरसीसी है, बट वही भी जो अधिकारी है, जो मॉनिटरिंग ऑफिशियल्स है, जो हेड टीचर्स है, वो उनका इवन एसएमडीसी, इज ऑल पीपुल्स, दे हैव देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। वो क्या कर सकते हैं एजुकेशन को थोड़ा अच्छा करने के लिए, बिकॉज एवरीबॉडी नीड्स, ये तो एजुकेशन तो ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन वी हैव टू गिव। देन accreditations and school, so in addition you can second aspect higher education, third aspect other key areas, fourth aspect how to make it happen। so इसलिए मेरा कहने का मतलब है ये जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी को that means the 5 important pillars of the policy they have emphasized, that is access to education, all should get education, accessibility, whoever he or she may be, कोई भी जगह में बढ़ता है, whatever may be the that means economic condition, वो बच्चा और बच्ची स्कूल में दाखिल होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन। सो एक्सेस टू एजुकेशन टू एवरीवन एक वेरी बड़ा मुद्दा है in national education policy। 5 important pillars: access to education, equality, that means everybody in the eyes of law equal, हम इसको किसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हम गरीब है, पढ़ नहीं सकते हैं, वो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी, एवरीबॉडी हैज टू इक्वल इन द एजुकेशनल स्फीयर एवरीवेयर, नॉट ओनली एजुकेशन, एवरीवेयर एवरीबॉडी हैज टू गेट द इक्वल थिंग्स, हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं। देन इक्विटी, एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, एक अनदर टर्म इज यूज क्वालिटी एजुकेशन। खाली बच्चा स्कूल में आने से, थोड़ा कुछ पढ़ाई कर देने से और थोड़ा मिड डे मील दे देने से वो क्वालिटी एनहांसमेंट होता है, वो गारंटी नोबडी कैन गिव। इसलिए ये पॉलिसी में जो एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वालिटी इन एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, कैसे हाउ कैन वी एबल टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, क्या क्या पैरामीटर्स कैसे हम बनाएंगे, क्या क्या करेंगे स्कूल में, ये बढ़िया, ये इट इज ए वेरी गुड पॉलिसी एंड एवरीबॉडी इज टू इंटरनलाइज इट। ये हम लोग इसको लेंगे तो इंटरनलाइज करेंगे, पॉलिसी को हम लोग इम्प्लीमेंट अच्छा से कर सकते हैं। सो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर ही जिम्मेदारी है। क्लासरूम में तो 7-8 घंटा ये बच्चा पेरेंट्स से आता है, जो कम्यूटर घर से जो स्कूल आते हैं, जहां में बच्चा रहते हैं स्कूल में, वो तो 24 आवर्स रहते हैं। जो बच्चा घर से आकर पाठ पढ़ के चला जाता है अपना घर में, सो वही जो 7-8 घंटा रहता है बच्चा, 6 to 8 आवर्स, कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन को हम एम्फासिस कर सकते हैं। ये है वेरी अफोर्डेबिलिटी। हम एजुकेशन को कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट। लाइफ का इंप्रूवमेंट करने के लिए एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वीपन्स। ये वीपन को हमको शार्पन करना पड़ेगा। अफोर्डेबिलिटी, एवरी पेरेंट्स, एवरी इंडियंस, एवरी इंडिविजुअल वो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, इसका बारे में भी कुछ बताया है। सो दैट इज व्हाई अकाउंटेबिलिटी, वी मस्ट बी अकाउंटेबल टू एजुकेशन। हम लोग सारी जितना आदमी अब बैठे हैं, अराउंड आई कैन से दैट कितना 74 पार्टिसिपेंट्स आर अटेंडिंग, ऑल द 74 इंक्लूडिंग मी एंड सेनापति सर, ऑल ऑफ अस आर रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। सो एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वालिटी इन एजुकेशन, quality in educations and affordability in educations and accountability in the system, ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, सो टू स्टूडेंट, टीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब पीपल हाउ टू डेवलप। ये जो आजकल सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में हम लोग जो पाठ पढ़ते थे हम लोग का टाइम में, क्रैमिंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट, रिमेम्बरिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। अभी कॉम्पिटेंसी एंड प्रोसेस,
not end product. We want to give how a person can solve the problem. We have to रास्ता दिखाना है उनको, competency, not content mastery, that how he can able to solve the day-to-day problem, how he can able to have a problem solving ability, how a बच्चा कैसे creative thinking सोच सकता है, नया चीज सोच सकता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल, इस बारे में कैसे बच्चे को हम लोग बिगिनिंग से मजबूत कराएंगे, एकदम वेरी पावरफुल आइडियाज देंगे, सो दैट वो बच्चा विल बी ए वेरी गुड सिटीजन, वैल्यू बेस्ड, नॉलेज बेस्ड एंड हैविंग वेरी एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. सो इसलिए ये जो पॉलिसी में 10 अराउंड 20 to 24 डिफरेंट क्या बताएंगे प्रिंसिपल्स, ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया. आइडेंटिटी, इसको डिटेल नहीं बता सकते बिकॉज लॉट ऑफ टाइमिंग रिक्वायर्ड. सो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, जो कुछ है, लर्नर्स हैव द एबिलिटी टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टोरीज. ये जो एक वार बताया फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, तो नो हार्ड सेपरेशन. आपको आप तो वेरी दैट मींस पढ़ा होगा, दैट मींस देयर इज नो हार्ड सेपरेशंस ऑफ दैट मींस करिकुलम. हम लोग अभी बताते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. सो ये जो स्कूल स्टेज में इसको हम थोड़ा सोचेंगे एवरीबॉडी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है खेलकूद का बारे में, दूसरा का इंटरेस्ट है लॉ और दैट मीन्स स्किल का बारे में, वुड वर्क का बारे में, तीसरा का इंटरेस्ट. सो इसलिए कोशिश किया जाएगा, ये जो पॉलिसी बता रहे हैं, वी हैव टू हैव ए दैट मीन्स फ्रीडम. ये बच्चा कम से कम अपना इंटरेस्ट को लेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, नो प्रॉब्लम. पेरेंट्स लोग छोड़ेंगे नहीं इमीडिएटली दैट मेरा बच्चा इंजीनियर होगा, कोई बात नहीं, वो मैथमेटिक्स पढ़ने दीजिए. बट एक कम से कम एक स्किल बेस्ड एजुकेशन, इसको वो अपना मन मुताबिक, अपना इंटरेस्ट मुताबिक ही शुड चूज, बिकॉज एवरी स्कूल कैन नॉट प्रोवाइड ऑल दीज फैसिलिटीज. वही जगह में सपोज झारखंड में डिफरेंट, मेरे ख्याल से 24 डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल. वही डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चा आता है अपना जो स्किल एंड कॉम्पिटेंसी इंटरेस्टेड टू टेक, हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इसलिए फ्रीडम एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी इज टू बी गिविंग मच मोर एम्फेसिस ये पॉलिसी में दिया गया है. हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो न्यूमरेसी है आपका, जो हमको 4 जो addition, subtractions, multiplications and division, ये जो बेसिक चीज है, by the end of class 3 every child must be mastered gradually. हम कर नहीं सकते, बट हम नहीं, इसका मीनिंग नहीं है हम नहीं पढ़ाते, हम भी पढ़ाते हैं. सो बट एनीवे, सो ये जो जो एक वर्ड बताया मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, that means across the discipline, that means science, social science, arts, humanities, sports, हम जो बताते हैं इसको हम लोग छोड़ देंगे अभी. कम से कम बच्चों का जो क्रिएटिविटी, बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब. एंड इन एडिशन टू दैट जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, बिकॉज वी कैन नॉट लिव, बिकॉज our constitutional liberty, equality, fraternity, respect, values, ये सब. In addition to that, also ये policy में पहले से भी था 1986 में भी that language, that means every child has to be taught अपना मदर टंग में. अभी भी हम लोग नहीं पढ़ा सकते कोई की जगह में, जबरदस्ती करते हैं भाई आप दूसरा लैंग्वेज में पढ़िए. Suppose for example in the Jharkhand, many tribal students are there and schools, because government of India तरफ से that is that means बच्चा को बताते हैं अपना लैंग्वेज में, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी तक जा सकता है. बट हम लोग टीचर नहीं दे सकते हैं, कभी कभी हम रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जो एक कॉमन लैंग्वेज होता है. सपोज उड़िया इज द मदर टंग, बट ट्राइबल स्टूडेंट दे डोंट हैव द मदर टंग. ये कंध, ये कोल्ह और ये दैट मींस सौरा, दे आर कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर levels of they are having their own way of talking at home, but हम लोग नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं. so इसलिए एम्फेसिस दिया गया है ये पॉलिसी में that अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन मदर टंग. इफ आई एम टॉकिंग ओडिया, एटलीस्ट प्राइमरी तक तो डेफिनेटली देना है, अपर प्राइमरी तक दे सकते हैं.
as far as possible, so that बच्चा अपना जो क्रिएटिविटी, अपना थिंकिंग, अपना आइडियाज, अपना आइडियोलॉजी, अपना वैल्यूज, अपना आइडियाज को दूसरा का सामने में प्रकाश कर सकता है. सो इसीलिए वो ये जो करने के लिए टीचर हैज टू बी अपॉइंटेड. हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम बताते हैं बहुत चीज, बट हम टीचर नहीं देते हैं स्कूल में. ये बड़ा प्रॉब्लम है. सो हम बताऊंगा बारे में. सो इसलिए इन एडिशन टू दैट, ये जो पॉलिसी में वो बताते 360 डिग्री असेसमेंट, एंड दे हैव गिवन मच मोर एम्फेसिस ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लर्निंग. दैट मीन्स हम लोग इसका मीनिंग नहीं, हम नहीं करते जो असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ये जो तीनों वर्ड फॉर, आज एंड ऑफ, ये तीनों वर्ड का डिफरेंस बहुत है. बिकॉज एवरी टीचर अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, आप हम नहीं बता सकते हैं एवरी प्लेस में समान टाइप ऑफ असेसमेंट विल बी. ओके, 3, 5, 8 में स्टेट एग्जामिनेशन होगा एंड 10 and 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा. वो तो ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. बट ये जो क्लासरूम में much more emphasis will be given on formative. That means teacher is the prime role, has to play prime role. टीचर को अपना तरीका से असेसमेंट करना पड़ेगा 24 आवर्स. ये दैट मीन 360 एवरी डे. बच्चा गेम में भी गेम करेगा, बच्चा क्लासरूम में बैठेगा, बच्चा बाहर में भी जाएगा, क्लासरूम से पिकनिक में भी जाएगा, बच्चा को एक्सटेम्पोर. सो वेराइटीज ऑफ एक्टिविटी, जो conceptual understanding related to content and beyond to the content, जो affective dimensions and social dimensions, and that means we can say that hands-on experience as far as possible. बच्चे को क्लास अभी क्या बताते हैं, 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन है. बच्चे को तो पहले क्लास 1 से when the बच्चा when 3 क्लास से A3 में एंट्री कर रहा है, that means बाल भट्टिका में जा रहा है बच्चा, उसी टाइम से कंडीशनिंग करना पड़ेगा. सो दैट बार बाहर में बाद में देयर विल बी नो प्रॉब्लम. सो इसलिए मेरा कहने का मतलब है दैट यू हैव टू बी ट्यून आवर चाइल्ड फ्रॉम द डे वन. वी हैव टू चेंज. इफ लैटर पार्ट ऑफ द लाइफ में हम कोई चीज अडॉप्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकता है. हम नहीं बता रहे हैं दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. But if we start from the early, suppose अभी जो क्लास एंट्री 3, अभी जो नेशनल एजुकेशन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस बताया, दैट इज फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 years, 2 भाग किया है. दैट मीन्स प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लास 1 तो फाउंडेशनल स्टेज में हम क्या उसी टाइम से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? बच्चा को उसी टाइम से स्टार्ट करना पड़े. नहीं वो कुछ भी नहीं. सो देन प्रिपरेटरी स्टेज, देन एलिमेंटरी स्टेज, देन सेकेंडरी स्टेज. बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं 12th क्लास में हम क्वेश्चन competency based test करेंगे. What is about फाउंडेशनल स्टेज, व्हाट इज अबाउट प्रिपेयर स्टेज. सो उसी टाइम से करने से फ्यूचर में देयर विल बी लेस प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड. बट इसीलिए जो लैटर पार्ट ऑफ द टाइम में हम जो करते हैं थोड़ा डिफिकल्टीज होता है. टीचर लोग को भी ओरिएंटेशन चाहिए. सो इसीलिए जो क्वालिटी टीचर, हम लोग को क्वालिटी टीचर भी चाहिए सिस्टम में. वही भी टीचर ऐसे जो आता है सिस्टम में क्या करते हैं ना, कभी कभी ऑन आई शुड नॉट यूज द वर्ड माने अनइंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम अ टीचर, और कुछ नहीं मिलता है टीचर जॉब में चला जाते हैं. वो सिस्टम होना नहीं चाहिए. सो इसीलिए ये जो टीचर जो हो जाएगा सिस्टम में, इट इज पब्लिक सर्विस. यू आर एक्सेप्टिंग को भी नजर आता है कि हाँ भाई हम कहने का मतलब है लॉट ऑफ एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन दैट मींस टीचर्स का बारे में. बट एनी हाउ, so what I want to say is that so we have to be very very careful. Why? इसीलिए when we talk about that is our that means early childhood, the foundational stage of learning, 4-5 चीज very emphatically they have said that the founded, that is our 85% children, that cumulative growth development happens in the brain prior to the age of 6. ये हम नहीं बता रहे, ये पॉलिसी लिखा है. कहां से लिखा है? रिसर्च स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब 85% चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट हैपन बिफोर एज 6, वही पीरियड इज क्रिटिकल पीरियड इन द लाइफ. वो बच्चा को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, फ्यूचर में वो बच्चा अच्छा से बच्चा हम लोग इसीलिए तो सोसाइटी में लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आर हैपनिंग. सो इसीलिए सो व्हाटएवर वी वांट टू डू,
एम्फासिस जैसे बिकॉज घर का फाउंडेशन गड़बड़ हो जाएगा, गिरने का चांस है। इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन चाइल्ड इन द फाउंडेशन स्टेज, देन फ्यूचर में देयर मे बी कॉम्प्लिकेशन। आई एम नॉट से आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन माय ओन अप्रोच। बच्चा अपने अपने कर सकता है, बट if there is an opportunity, if all the researchers of the world they are saying brain development takes place, 85% brain development takes place, that means occur prior to age 6, why can't we give it? Why can't we give care? Why can't we give good education? Why can't we give proper nourishing? Why can't we give, that means competency related development? So but anyway, अभी जो पॉलिसी में दिया गया है that as far as possible by 2030 we will be ensure that all students entering grade 1, that means school ready, 30 long period है, but we should prepare ourselves. ये जो period है, ये जो that play based, flexible learning, activity based, inquiry based, drawing based, painting based, ये coloring, puzzles, drama, craft, ये visual art, ये सब कुछ हम लोग को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, सो दैट बच्चा का जो ओपननेस, दिमाग विल बी ओपन, बिकॉज ऑल ऑफ डिफरेंट। बच्चा जब चाइल्ड क्लास, आप देखा होगा, दो जो आर इन्वॉल्व इन द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम में, ये बच्चा जब हम देख रहे हैं, हम लोग का रीजनल इंस्टीट्यूट में डीएम स्कूल का बच्चा प्री प्राइमरी में जब एडमिशन होता है, बच्चा 25 एडमिशन लिया है, हम जब 1 घंटा जब मार किया इनका दरवाजा में घर का, दैट मीन्स देखा what they are talking, how they are eating, how they are learning, how they, because everybody has come from different families, वो अपना अपनी कैसे बात करते हैं, क्या चाहते हैं, सो उसी टाइमिंग में if we can give enough opportunity, toy based हम कर सकते हैं, टॉय दे सकते हैं, एंड we can able to that, हम इसको प्ले करा सकते हैं, ड्राइंग करा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, इनका क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, अपना बात करो। छोटा बच्चा जब घर में, जब पापा एंड मम्मी उनका बच्चा, छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा आराम से बात करे, वही प्यार टीचर, that is a foundation stage, and automatically the speaking power, listening power, and gradually it will be, and that is why a national curricular and pedagogical framework for early childhood is already developed. All of you might have seen it, how beautifully it has been prepared. It has been released by the government of India by Honorable Education Minister. NCERT has prepared. So मेरा कहने का मतलब है, जो universal access to high quality ECCE, high quality ECCE, it has to be strengthened. High quality education हम दे सकते हैं, हमका इंटरेस्ट चाहिए, बच्चों टीचर का इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, हम एक साइड में बता दे टीचर नहीं दे सकते हैं, भाई क्यों नहीं दे सकते हैं, बट वी आर थिंकिंग टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, बट टीचर भी नहीं देंगे, बट 5 क्लास के 1 टीचर देंगे, 5 क्लास के लिए 2 टीचर, ये कहाँ से कौन सा थिंकिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इफ द पर्सन इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जितना क्लास जितना टीचर तो कम से कम सोचो। इफ आई वांट टू कंधा चाइल्ड को हम पढ़ाएंगे, एक कंधा टीचर क्लास लेवल में अपना तरीका से अच्छा से बना सकता है, हम नहीं बता सकते हैं। सो इसलिए लोकल स्पेसिफिक वेरी वेरी, दैट मीन्स अपना लैंग्वेज का टीचर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हम लोग रिसर्च किया है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के ऊपर में, हम देखा है इफ ए पर्सन टीचर अपना लैंग्वेज से अपना बच्चा से क्लास 1, पहले हम लोग क्लास 1, 2, 3 में क्या है, बिफोर दैट ये जो बच्चा जब स्कूल से, घर से स्कूल आता है, वही टीचर वो थोड़ा ट्रेनिंग देकर बच्चों को अच्छा से आराम से क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। जो एम्फेसिस हम सोचते हैं इंक्वायरी बेस्ड एंड वी कैन से दैट एक्टिविटी बेस्ड और वी कैन क्वेश्चन बेस्ड बच्चा कर सकता है, सो इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई प्ले बेस्ड लर्निंग विथ ए फोकस ऑन डेवलपिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज, ये तीनों को हमको पहले से ही एम्फेसिस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा, अभी देखिए हम लोग एवरी पेरेंट्स, आप भी पेरेंट्स हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, ऑल ऑफ अस वी आर थिंकिंग मेरा बच्चा 90% 100% मार्क रख दे। 100% मार्क वही नहीं मना नहीं कर रहा है, करने दीजिए व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट गुड ह्यूमन बींग्स बनाने के लिए इसका भी एक तरीका होता है, वैल्यू बेस्ड पर्सन बनाने के लिए भी एक तरीका होता है। इसलिए 100% रखने कॉग्निटिव कोई बात नहीं है, कॉग्निटिव का साथ साथ अच्छा ह्यूमन बींग, अच्छा इंसान
आप अपना चीज अपना कर सकते हैं, टू नो अबाउट व्हाट इज द रियलिटी, ए रियल लाइफ सिचुएशन। सो ये जो चीज है टीचर्स, दैट इज व्हाई जो अंगनवाड़ी वर्कर्स है और दो टीचर्स, those who are there, at least जो पॉलिसी में दो चीज बता गया, that means those who are having perhaps 10th class अंगनवाड़ी टीचर, इसको that means एक साल का 10+2 1 year डिप्लोमा ऑफ लोअर क्वालिफिकेशन पीपल, जो 10th क्लास पास किया, बाई चांस हम अपॉइंटमेंट कर दिया, उनको एक 1 year डिप्लोमा हाउ टू हैंडल स्मॉल चाइल्ड, जो नेशनल NTT नेशनल टीचर ट्रेनिंग, सॉरी दैट मीन्स जो बच्चों को हम लोग अभी जो गवर्नमेंट का तरफ से जो 6 to 14 था RT एक्ट में, अभी इसको लोअर डाउन कर इसको 3 से कर रहे हैं, 3 सो मेरे कहने का मतलब है जो 10+2 इफ द टीचर इज अपॉइंटेड एज अंगनवाड़ी वर्कर, 6 महीना का सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होना चाहिए, एंड इफ 10th क्लास पास और बिलो वो 1 year दैट मीन्स डिप्लोमा प्रोग्राम होना चाहिए, बिकॉज दे मस्ट नो हाउ टू हैंडल ए स्मॉल चाइल्ड, बिकॉज स्मॉल चाइल्ड का जो कॉग्निटिव, इसका सोशल, इसका इमोशनल, इसका वाइटल, इसका मोटर डेवलपमेंट का बारे में टीचर को वेरी वेल थॉरो नॉलेज होना चाहिए। बट ये जो पॉलिसी में जो इसका बारे में जो दिया गया है, इसका जो करिकुलम, हम लोग क्या करते हैं जनरली, आई शुड नॉट स्पीक, बट प्राइवेट स्कूल क्या करता है, इतना वर्कलोड, इतना हेवी बुक दे देता है बच्चा को, जो कुछ आता है उनको दे देता है। अरे रिक्वायरमेंट है कि बच्चा का एक है NCERT का तरफ से जो वेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो वेट, कितना एक 3 साल का बच्चा कितना भार लेकर जा सकता है स्कूल में, इतना। सो देखा जाए ओवरलोडेड, सो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट, दैट करिकुलम शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। पढ़ाना क्या है, बच्चा को तो खिलाना है उसी टाइमिंग में, बच्चा को कैसे, दैट मीन्स वी कैन से दैट इज लॉट, बिकॉज अभी सेग्रीगेटेड मैनर में था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इवन ट्राइबल अफेयर्स डेवलपमेंट, ये जो मिनिस्ट्री जॉइंटली दे हैव टू सी लुक इनटू दैट, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी डिफिकल्टीज। सो मेरा कहने का मतलब है, सो वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। सो ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसलिए दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर स्कूल रेडी। वेदर ये बच्चा अभी तक कभी बहुत बच्चा वो प्री स्कूल नहीं जाकर डायरेक्टली क्लास 1 में आते हैं, some children they have gone to the preschool and come to the class 1। ये जो अभी सिस्टम अभी चेंज मेरा ख्याल से, ये जो फाउंडेशन स्टेज, प्रिपेरेटरी स्टेज, क्लास दैट मीन्स 3 years एंड क्लास 1 to द फाउंडर स्टेज, हम लोग हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफिशियली किया कि नहीं है मुझे पता नहीं इन द स्टेट ऑफ झारखंड, बट एनी हाउ इफ यू हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट national education policy का जो structural changes in school system, then that is why to ensure the students are school ready, if that means an in 3-month play based a school preparatory model, if the not done, so how best we can give, that means 3 महीने का एक मॉड्यूल बनाकर, in that means preparation model, school preparation model, how a bridge we can say the bridge course, otherwise we can say that, so that we can able to remove the barriers and we can have a bridge between that difficulties which the child, so that is why every child in the class 1 they have to have a 3-month bridge course. Iska bare mein they have given the ideas in the national education policy. Even we can say that in the foundational literacy, a very important words they have said, that is they have said peer tutoring can be taken as a voluntary joyful activities, that means under the supervision of teachers. I don't know how far it will be, but anyway small level का बच्चा एक as a teacher हम लोग भी बच्चा को देखते हैं, एक बच्चा थोड़ा कोई स्ट्रांग हो सकता है, कोई भी थोड़ा एकेडमिकली थोड़ा इंफीरियर हो सकता है, सो हम एज ए टीचर सपोज वो, दैट इज व्हाई इट इज सजेशन दैट peer tutoring can be taken as a
we can voluntary, that means joyful activity. अपना फ्रेंड अपना बच्चा को जिस तरह का बता सकता है अपना लैंग्वेज में, ये टीचर बता सकता है, but that will be much more, that means much more, that means beneficial to the small child as compared to other. So that is a, if we can also have a, that means implementation of peer tutoring, and because sometimes it अभी हम बताते हैं that means in the in all related to different knowledge sharing, that is digital infrastructure for knowledge sharing to serve as a aid to teachers to bridge the language barriers. But anyway, teachers के लिए Diksha is a platform through which a learner teacher can get lot of new ideas to bridge the gap in between the two. But anyhow, sometimes inspirational books for the students, or that is all in their languages, अपना language में कोई inspirational book को पढ़ने के लिए बच्चा को दिया जाएगा, so it may help to the child to become a successful person in the future time. That is why they have said in the policy that that is in they have said inspirational books for the students is to be initiated. टीचर का ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एरिया में टीचर है, अपना एरिया का एक कोई इंस्पिरेशनल पर्सन अवेलेबल है, इसका बारे में अपना लैंग्वेज में छोटा राइटिंग स्टोरी का मुताबिक और एनीथिंग इफ वी कैन एबल टू प्रोवाइड. So hopefully, even also they have given emphasis on nutrition and health of children will be addressed through healthy meals, midday meals का बारे में they have also said. Even they have said also about role of the community as well as counselor. So इसीलिए ये जो developing एक curiosity and थोड़ा सा जो अपना को बच्चा को कोलैबोरेटिव टीम वर्क अपना साथ में अपना फ्रेंड का साथ में हाउ टू लिव हाउ टू टॉक, ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस इसको हम एम्फासिस देंगे along with the numeracy and literacy from the early years of the life. Hopefully we can say that बच्चों का that is it can be helpful for improving the quality in the future times. In addition to that, that means यही जो national education policy में hopefully that our gross enrollment ratio for grade 6 to 8 was 90.9%, grade 9 में 9 to 10 में 79%, gradually decreasing, and grade 11 12 में 56% respectively. So out of school children's, if we have to see more than nearly, we can say that if we have to data, it may around 3 crores or 4 crores of the children they are drop out. So how to, that means reason क्या हो सकता है, बच्चा क्लास में आता है और रिटर्न चला जाता है, पढ़ने के लिए नहीं आता है. Who are responsible? Curriculum or teacher or teaching learning process or evaluation or infrastructure or technology or the difficult area? We don't know because many things can be very problematic. But anyway, वो policy में they have given that innovative alternative education center will be put in place. I don't know whether by the civil society, suppose going for migrant laborers and other, so that is, they have to brought back to the schools because alternative innovative center पहले भी था, but I have also gone and seen, but it is haphazard. Nobody, because those who are running that alternative innovator center by the NGO, they're hopefully they are commercialized in their mentality, and they are not very rarest of the rare. Okay, 5 to 10% centers are very good and innovations and they're taking care. वो तो ठीक है, but all the centers should be like that. Those who are migrant laborer, those who are going, that means for the field work, they to maintain their livelihood, seasonal, so all the things are there. But anyway, so universal participation in school by, that means learners, is to be ensured in this policy. That is why ensuring quality learning, teacher deployment with knowledge of the local language to be emphasized. बच्चा जब drop out हो जाता है, maybe one of the reasons they have realized that टीचर अपना लैंग्वेज से नहीं पढ़ाता है बेसिक टाइम में,
that means a lower class में. So knowledge of local language to be emphasized while the teacher is to be deployed, the teacher is to be appointed. So वो बारे में भी they have given emphasis. But this all depends upon the state, because state has to develop the quality of the learners learning. कौन सा एरिया में कौन सा टाइप ऑफ बच्चा, कौन सा टाइप ऑफ टीचर जरूरत है, वो स्टेट को 100%, because state in the sense means if a particular block or if a particular cluster, if a particular district, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट में, आई एम द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मेरा अंडर में बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, एक डिस्ट्रिक्ट में कितना ब्लॉक हो सकता है, मेरा ब्लॉक में किस टाइप ऑफ चिल्ड्रन आ रहे हैं, ओनली ट्राइबल चिल्ड्रन आर कमिंग, ओनली मिक्स्ड चिल्ड्रन आर कमिंग, ओनली मुस्लिम चिल्ड्रन आर कमिंग, ओनली गर्ल्स चिल्ड्रन आर कमिंग. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई हैव टू थिंक ऑफ. वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते एवरीवेयर सेम फैसिलिटीज. भाई एक जगह में 25, we think there is a norms for the quality education or bringing improvement of the quality. So ensuring the quality of the learners learning, मेरा को कौन सा टीचर हम अपॉइंटमेंट कर सकता है, ये जिम्मेदारी मेरा ख्याल से, आई डोंट नो, ये पॉलिसी में देखा हुआ है, क्वालिटी लर्निंग के लिए टीचर डिप्लॉयमेंट अपना लैंग्वेज में होना चाहिए. हम नहीं देंगे तो कैसे हो सकता है? थियोरेटिकली बताने से बिल्कुल नहीं होगा. इट्स ए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज. बच्चा क्लासरूम में बैठा है 25 या 30 बच्चा, ये दूसरा लैंग्वेज टीचर जाकर कुछ करेगा? कुछ नहीं कर सकता है. क्वालिटी इंश्योर कैसे कर सकते हैं? इसीलिए टू फैसिलिटेट, दैट इज ए मल्टीपल पाथ दे हैव शोन. समटाइम्स दे हैव सेड दैट इज आल्सो whether good or bad I don't want to say. Sometimes distance मोड में पढ़ा सकते हैं, ओपन डिस्टेंस, NIOS स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो तो ठीक है, एक साधन है, अनदर मीडियम है. बट ये वन पर्टिकुलर लर्नर, एक ग्रुप ऑफ लर्नर, मेरा डिस्ट्रिक्ट का, मेरा ब्लॉक का, एक पर्टिकुलर विलेज में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप से बच्चा आ रहा है, उनका क्वालिटी एजुकेशन जिम्मेदारी मेरा स्टेट का है. एज ए रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ दैट एरिया आई एम कोशिश करेगा. कोई लोकल वॉलंटियर भी मिल सकता है, पीयर ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करेगा, पीयर अपना बच्चा को पढ़ा सकते हैं, अपना बच्चा, अपना फ्रेंड्स. बट एनीवे अच्छा क्वालिटी टीचर हमको कोशिश करेगा, वी विल गिव टू दैट. दैट इज व्हाई सम फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी इसके बारे में भी बताया पॉलिसी में. भाई ये कोई बिल्ड, कोई स्कूल कर सकता है, कोई टीचर को पेमेंट कर सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को दे सकता है, कोई कुछ हेल्प कर सकता है, बिकॉज इट इज द रेस्पॉन्सिबल एवरीवन ऑफ अस. मेरा पास में 50 किताब है, अच्छा वाला इंस्पिरेशनल बुक्स है, हम घर में रखते हैं. बट इफ नई एरिया में मेरा बच्चा मीन्स ऑल द एरिया पीपल्स बच्चा दे आर कमिंग टू स्कूल, वो किताब को हम जाकर स्कूल में रखेंगे, इसका हैबिट फॉर्मेशन करेंगे बच्चों का, दैट मीन्स इंश्योर करने के लिए. होपफुली दैट विल बी बेटर वन. हम बिकॉज इट इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन ऑफ अस. एवरीबडी हैज टू गो टू द दैट मीन्स थिंक इन द सेम. दैट मेरा खाली टीचर करेगा, पेरेंट्स नहीं करेगा, लोकल कम्युनिटी नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई कम्युनिटी एंड एलुमनी एसोसिएशन आल्सो रिस्पॉन्सिबल. हम एक स्कूल से पढ़ कर आया है, आई एम द एलुमनी ऑफ दैट स्कूल, मेरा भी जिम्मेदारी है स्कूल का इंप्रूवमेंट करने के लिए. कम्युनिटी, आई एम लिविंग इन दैट एरिया, मेरा स्कूल वही है, स्कूल का टीचर नहीं आ रहा है, आई एम बिलोंग्स टू, आई मे बी एजुकेटेड, मे नॉट बी एजुकेटेड, आई कैन आल्सो लुक आफ्टर. इट इज द जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी. दे हैव गिवन एम्फेसिस. Community and alumni volunteers also, they can support to give quality improvement. So कोई retired employees हो सकता है, कोई senior citizen हो सकता है, कोई भी person कोई एरिया का इंप्रूवमेंट करने के लिए भागीदारी, that means responsibility sharing. ये जब तक हम लोग का दिमाग में we cannot able to ensure, it is very difficult to say that ओनली स्कूल का टीचर सब कुछ कर सकता है, वो भी नहीं हो सकता है. दैट इज व्हाई ये जो है ना, जो करिकुलम जो होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी, ये जो पॉलिसी आप देखेंगे बहुत चीज दिया गया है. दैट दिया गया है लर्निंग हाउ टू लर्न, इसका बारे में ये बताए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स, एंड वो बता रहे हैं दैट वी मस्ट रिड्यूस द करिकुलम लोड and we must give emphasis on, that means essential requirement and competency related ideas among the students. because एक बच्चा जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता है, खाली नंबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा कोई भी. सो ग्रेजुअली इट इज नॉट
एक मेडिसिन इसको इमीडिएटली खा देने से कल को क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, वो भी नहीं है। इट इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल, इट इज नॉट इनविजिबल, इट इज नॉट विजिबल अनलेस यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकल। कोई सिचुएशन हम डालेंगे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बच्चा कैसे क्या सॉल्व कर सकता है ग्रेजुअली, इट्स ए ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। हम इसको इमीडिएटली नहीं देखा कर कोई किसका दिमाग को। सो इसलिए पॉलिसी में ये जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन है, हमको कैसे दैट मीन्स हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बता रहे हैं, आर्ट बेस्ड टॉय बेस्ड पेडागोजी, जो हम लोग का अभी एक कुछ दिन पहले झारखंड से कुछ फ्रेंड्स आए थे, टॉय बेस्ड पेडागोजी के बारे में दे वर डेमोन्स्ट्रेटिंग, आई वाज प्रेजेंट देयर, how a toy can be helpful to teach mathematics, science, social science and language concept. It was so marvelous and so enjoyable, but it is to be popularized. हम नहीं टॉय बेस्ड और आर्ट बेस्ड, हम लोग को अभी कला उत्सव हो रहा था भुवनेश्वर में 3 तारीख से 7 तारीख जनवरी में, ऑल ओवर कंट्री से, सारी स्टेट से 25 फ्रेंड्स, अराउंड 22 और 25 विथ एक्सपर्ट टीचर। सो आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, game related activities, sports related, so different, that means they have exhibited varieties of ways how a person can be able to improve, that means cognitive, affective, psychomotor, critical thinking as well as creative thinking, all they were exhibiting. It was very marvelous. So isko hum log ko immediately from the grassroots level, foundation stage onwards, we have to implement that. That is why hands on experience hum karte hain, but haphazardly कभी कभी करते हैं। If we want to have the good learning, so hands on experience, बच्चा को अपना चीज अपना हाथ में करने के लिए हम प्रोत्साहन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज, then only there is every possibility that there will be lot of learning and improvement and development on the part of the learner when वो बच्चा अपना अपनी ग्रेजुअली 1 क्लास से दूसरा क्लास से जब सीनियर लेवल, और वी कैन से दैट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, अभी हायर सेकेंडरी वर्ड नहीं है, जब तक आ जाएगा 11th-12th क्लास तक सेकेंडरी लेवल, तो अपना जिम्मेदारी आप समझ सकता है। सो यही हम लोग कोशिश करना है, कंटेंट विल फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, आइडियाज, एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचिंग, लर्निंग, we can say that be an interactive mode of process. Questions will be encouraged, question and exploratory type of thinking is to be initiated. ये जो वार्डिंग लिखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, so we have to be from the day, from the immediate, अभी हम लोग को एक that means क्या बताएंगे भाव, that means we have to take responsibility as a teacher and teacher educators and officials of the state government for our own people development. अपना स्टेट का, अपना बच्चों का, अपना थिंकिंग कैसे हम उनको डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो इसलिए ये इसका बारे में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में कुछ नहीं है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इट इज नॉट ए वेरी बिग थिंग, एक्सपीरियंस बेस्ट एवरीबडी। हमको रोसाई करने के लिए नहीं आता है, एक दिन में थोड़ी हम बढ़िया वाला खाना बना सकते, नहीं बना सकते। सो एक्सपीरियंस ग्रेजुअली, सो इसलिए बच्चा जब फाउंडेशन स्टेज से सेकेंडरी स्टेज का आएगा वो ऑटोमेटिक, कोई क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप जितना फ्रेंड्स अभी बैठे हैं, अराउंड 85 फ्रेंड्स बैठे हैं, 85 फ्रेंड्स बच्चा फ्रेंड्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेटअप। कोई स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता था, कोई स्कूल में बढ़िया प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होता था, कोई स्कूल में लैबोरेटरी एक्टिविटीज अच्छा हो सकता है, कोई में खेलकूद अच्छा हो सकता है, सबको मिलाकर होलिस्टिक, इसीलिए बताते हैं असेसमेंट टूल्स आज फॉर एंड ऑफ, जो हम बता रहे थे, सेनापति सर बताएंगे अच्छा से इसको असेसमेंट के बारे में, तो इसको हम छोड़ देता हूँ। सो मेरा जो स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, दैट मींस स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, जो सेल्फ डायरेक्शन, ये टीम वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन, सेल्फ इनिशिएटिव, इसका जिम्मेदारी टीचर्स का है फ्रॉम द डे 1 व्हेन द चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल। ग्रासरूट लेवल का टीचर है, जो सेकेंडरी स्कूल का टीचर से, जो मिडिल स्कूल का टीचर से, जो वी कैन से दैट प्रिपरेटरी स्कूल स्टेज का टीचर से, जो इसका ऑफिशियल से, ऑल हैव टू गो इन द सेम डायरेक्शन। भाई हम लोग का जिम्मेदारी है सेल्फ इनिशिएटिव डेवलपमेंट करना है, टीम वर्क को डेवलपमेंट करना है, एनकरेजमेंट बच्चा को करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट करना है। सो इसीलिए एम्पावरिंग स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी, ये हम लोग का जिम्मेदारी है।
ये एक आदमी का नहीं है, एक टीचर का नहीं है, एक टीचर का नहीं है। एक स्कूल में एक ही टीचर हो सकता है, 2 टीचर हो सकता है। हाउ कैन आई ब्रिंग इम्प्रूवमेंट? हम कैसे पीयर ट्यूटरिंग, कैसे रिटायर लोगों को इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, कैसे एनजीओ को इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, कैसे अदर ऑफिशियल्स गांव में है इसको इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। ये आई हैव टू ओपन अप। मेरा ख्याल से ये जो पॉलिसी में ये सब दिशा दिखाया गया, तो इसीलिए दैट मीन्स ये पावर, जो लैंग्वेज के बारे में बताया, अपना लैंग्वेज में बच्चा को पढ़ाने से अपना बच्चा आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना व्यूज एंड आइडिया। इवन दो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हम इसका डिटेल नहीं बता रहे हैं, बट मेरा कहने का मतलब है दैट करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट एंड स्किल्स ऑफ द एंड कैपेसिटी, जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो दैट होपफुली जो पेडागोजी एंड करिकुलम एंड टीचर, ये 3 विंग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का करिकुलम जो दिया गया है, करिकुलम मीनिंग नहीं है ओनली जो प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, हिडन करिकुलम जो आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, और कोई डांस एंड डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं, वो भी है, ये भी हिडन करिकुलम है, ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम। हम एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं बता रहे इसको, ये भी करिकुलम है। बिकॉज बच्चा को ओवरऑल डेवलपमेंट लाने के लिए जो करिकुलम का बारे में, पेडागोजी कैसे हम पढ़ाऊंगा, टीचर इज द बेस्ट मेथड, ये बताया। हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टॉय बेस्ड लर्निंग, दैट मीन्स आर्ट बेस्ड लर्निंग, कोई बताते हैं हम दूसरा कुछ अपना तरीका से नया चीज बना सकते हैं बच्चा को करने के लिए, पढ़ाने के लिए, साइंस का नॉलेज का डेवलपमेंट करने के लिए। देयर इज नो सेपरेशन। सोशल सोसाइटी का बारे में, बच्चों को डेमोक्रेसी के बारे में हम क्या करेगा वो सोचना पड़ेगा। सो इसीलिए मेरा कहने का मतलब वो जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग, इसको हमको जिम्मेदारी लेकर बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जो 10 डेज बैगलेस डे का बारे में बताया 6 to 8 क्लास के लिए, फॉर्न प्रोजेक्ट का बारे में जो बताया, दैट एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट दे हैव टू हैव ए नॉलेज ऑफ इंडिया। भाई हम तो बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ झारखंड, तमिलनाडु में नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में क्या, उनका सोर्स ऑफ वाटर, ये जो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, ये जो हम क्या करेंगे 6 to 8 बच्चा 10 डेज बैगलेस का बारे में, बच्चा स्कूल आएगा विदाउट बैग में, हम किसको बैठाएंगे और ओनली क्लासरूम का आउटसाइड ड्रामा एंड डांस करेंगे, क्या करेंगे? इट इज द स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द डिस्ट्रिक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द स्कूल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो इसीलिए इसको 100% गारंटी नहीं है स्टेट विल डिजाइन, दैट मीन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, वो नहीं होना नहीं चाहिए। मेरा जो 6 to 10 डेज जो बच्चा आएंगे, 10 डेज बैकलेस डे, मेरा एरिया में जो कुछ फैसिलिटीज है, इन एडिशन टू दैट स्टेट का भी नीड हम देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को देखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे ये जो 10 डेज में, इट विल बी ए प्रोडक्टिव एंड हाई क्वालिटी लर्निंग ऑन द पार्ट। हम लोग कम्युनिटी वर्क को बच्चों को ले रहे हैं 10 दिन के लिए, बड़ा बड़ा बच्चा जो है बीएड पढ़ते हैं, 10 दिन हम गांव में लेकर जाते हैं, बच्चा गांव में रहता है, इतना फील करता है कल्चर, that means a different type of feelings, that means giving, that means their own energy for development of the village, and they are making awareness program, they are showing cultural activity, they are playing with the community peoples, they are going and discussing with the families, they are also collecting lot of information and discussing and और एग्जीबिशन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो 10 डेज बैगलेस डे, इट इज ए वेरी गुड प्रोपोजिशन। बच्चा जब क्लास में किताब हर एक दिन लेकर आता है, 10 दिन नहीं लाएगा, हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक एजुकेशनल जोन का बारे में क्या हमको क्या कर सकते हैं ये 10 डेज में, इट विल बी रिवार्डिंग टू द स्टूडेंट्स, ये सोचना पड़ेगा। सो इसीलिए अभी लॉट ऑफ, राजस्थान में दे हैव डन लॉट ऑफ गुड वर्क, and many government of India has also, that you have to see the website, there are lot of good 10 days materials that हम साइंस का बारे में, सोशल के बारे में, बैंक का बारे में, कम्युनिटी रिलेटेड का बारे में, विलेज का बारे में, नदी का बारे में, ऐसे सो लॉट ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट पीरियड क्लास 1 का, 6 का बच्चा, 7 का बच्चा, 8 का बच्चा, एक दिन मिलाएंगे, एक दिन सेपरेटली, कहाँ लेंगे, क्या करेंगे, ये सोचने का चीज। वोकेशनल एक्सपर्ट, गांव में वोकेशनल एक्सपर्ट होते, कारपेंटर भी हो सकता है, गार्डनर भी हो सकता है, पॉटर्स भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, किसका साथ में मिलाएंगे, कैसे आइडिया लेंगे।
so that बच्चा अपना जो अपना हाथ में अपना चीज करने करेगा, so that we can say that some of the good vocational qualities can be also, but learning by doing, ये तो हम नहीं बता रहे हैं, गांधी जी भी बताया, अपना चीज अपने करने से you will be getting satisfaction. If you are getting satisfaction, you will be earning also. But anyhow, मेरा कहने का मतलब है, so doing what's right, that means your ethical and moral values, the constitutional values, ये सब चीज को that means सामने में रखकर, so we should be very careful. So our curriculum and pedagogy in different stages में, that is to be initiated. But anyhow, there are a lot of good things and other things. So इसका, so point of saying is that if you have to see that the teachers का बारे में भी कुछ बताया, teacher save the future of our nation. ये तो हम नहीं बता रहे, everybody, that future of our nation depends upon the teacher. 21st century school education changes a lot. It's paradigm shift. Lot of, that means हम लोग जब खाली कंटेंट पढ़ाते हैं, कंटेंट, if you go to different schools, भाई इसको जल्दी खत्म करो, कंटेंट रटाओ बच्चे को, ये होना नहीं चाहिए. बच्चा को इन्वॉल्वमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज व्हाई प्रोसेस टू जो कॉम्पिटेंसी का बारे में बता रहे हैं जो पॉलिसी में, टीचर्स आर द फ्रंट लाइन प्रोवाइडर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. टीचर सब कुछ कर सकते हैं. टीचर भी रॉन्ग चीज बता सकता है बच्चा को, वो भी प्रोपेगेट हो सकता है. टीचर भी अच्छा चीज बता सकता है, वो भी प्रोपेगेट. दैट इज व्हाई जो अप्रोचेस टू टीचर एजुकेशन ये बता रहे हैं 2030 तक, दैट मीन्स ओनली इंटीग्रेटेड टीचर, ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलेगा. अभी तो दे हैव सजेस्टेड, दैट मीन्स 2 years प्रोग्राम चलेगा. जो आर मास्टर डिग्री होल्डर्स 1 year चलेगा. अभी मास्टर डिग्री वाला को हम लोग नहीं कर रहे हैं, 2 साल का कर रहे हैं, 4 साल का कर रहे हैं. दैट इज जो है वो क्या होगा चाहिए. सो बच्चा जो व्हेन द शॉर्ट टर्म B.Ed सर्टिफिकेट एंड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो सजेशन दिया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में होगा, wherever different people's different combination of courses will, इसमें भी टेक्नोलॉजी कोर्स होगा, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन टेक्नोलॉजी कोर्स होगा, मेडिक, सो डिफरेंट पीपल्स, जो इट विल बी ब्रॉड बेस्ड. टीचर एजुकेशन करिकुलम ये होना चाहिए. टीचर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होगा. वो दे आर सजेस्टिंग एंड दे हैव आल्सो से दैट इज टीचर एजुकेशन करिकुलम, दैट इज टू बी different varieties from society levels, from historical perspective, from science perspectives, from psychology perspectives, from foundation perspectives, from knowledge of India, values, culture, art, tradition, music, everything is to be given, so that a teacher who is coming from the system, he will have a very broad based, that means teacher should have a very ideas about our constitution, ideas about the sociology, society के बारे में, फिलोसफी के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में, मॉडर्न इंडिया के बारे में, एंड साइंस. सो इट इज अ मिक्सचर. अभी तो टीचर एजुकेशन करिकुलम बहुत जगह में इतना, आई शुड नॉट स्पीक वेरी पुअर, माने इट इज नॉट ट्यून्ड विद द सोसाइटी. सो इसीलिए वो सब ग्लोबल कंसेप्ट के बारे में, सो वेराइटीज ऑफ, सो अभी जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है, many places we are having very strong teacher education, many good institutions are there, they are running a very holistic teacher education curriculum, but some places में they are spoiling. बच्चा एडमिशन लेता है, नहीं जाता है, no internship, no community work, no practicum, no theory, that means खाली एग्जामिनेशन देकर, एग्जामिनेशन में कभी कभी बच्चा नहीं देते. बट ये जो पॉलिसी में टीचर एजुकेशन, टीचर एंड टीचर एजुकेशन के बारे में, जो टीचर का रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत बताया, जो हम लोग जो टीचर करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, उसका वो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो टेस्ट करेगा. देन टीचर हैज टू अपीयर TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्क. देन इसका, दैट मीन्स दे हैव सेड 3-4 थिंग्स दैट they have to be, that is the teacher must have to have knowledge related to the content, that means knowledge related to the society, disposition capability, how he is effectively disposing, how he is able to demonstrate, demonstration capability. So इसीलिए
टेक्नोलॉजी बेस्ड जो रिक्रूटमेंट होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट, दैट मीन्स वो ट्रांसफर एंड रिक्रूटमेंट, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैव टू बी यूज्ड, नो इन बिटवीन। दैट मीन्स आप एक एप्लीकेशन दे दिया एक बीईओ का, डीईओ और कोई ऑफिशियल को वो चेंज कर देगा, वो नहीं हो सकता है। देयर इज ए टाइम लिमिट, यू हैव टू अप्लाई। सो मेरा कहने का मतलब है दैट टीचर इज दैट इज द ह्यूमन रिसोर्सेस, that is a must. So the teacher education and linkage with other institutions, that is to be giving lot of priority in the teacher education program. Even वो जो 50 घंटा का जो बताया continuous professional development, every year every teacher educator, even the head teacher, they have to go for 50 घंटा का, that means a professional development करने के लिए each teacher has to participate 50 hours of, that means professional development program, depending upon the interest and pedagogies and the foundations of literacy and numeracy, even sometimes assessment का बारे में, sometimes experiential learning का बारे में, sometimes different approach का बारे में. So that is why अभी वो बताए in the policy that MOOC and Swayam and e-Vidya Diksha portals, every platform will be open. Okay, online and offline. It may be online mode, it may be offline mode. But anyway, even that is IGNU is now organizing through online mode. MOOC platform में they are giving the training program through. So इसलिए a comprehensive idea. Even if I have joined old teacher, 20-30 years of experience, I have to go for training. A new teacher. So depending upon the requirement and needs, so we have to. So even also, they have also suggested that a foundation stage ka teacher, somebody got the appointment, he or she has to also have a vertical mobility. There will be PRT, there will be PGT, there will be TGT and PGT. Not exactly the name, but financial constraint will not be there. The career growth will be available within the each, that means single stage of the school. कोई भी स्टेज में आप जा सकते हैं, फाउंडेशन वाला भी जा सकता है, प्रिपरेटरी वाला भी, फाउंडेशन वाला भी जा सकता है, सेकेंडरी फाउंडेशन वाला भी जा सकता है कॉलेज लेवल में. देयर इज नो हार्म, बट ही हैज टू हैव सम, दैट मींस ब्रिज कोर्स, and he has to have a vocational, a vertical mobility will be there, and he has to check some, that means additional courses for that. But even if I am appointed as a teacher of foundation stage, I will be getting the same financial benefit even if another teacher is appointed as a teacher in the secondary stage. So the 4-year integrated ITEP teacher education program में अभी जो suggestion है, that is first 2 years will be common for everybody, last 2 years will be pedagogical differences. That means there will be foundation, preparatory, middle and secondary stage का pedagogy. Because a बच्चा of 3 years old and a child of 12 years old and another one is 18 years old, उनका जो requirement है, the pedagogical requirement, उनका जो thinking level से, to handle that, that will be separate. In the same program, different type of teachers will come out. That is my assumption. I don't know when it will be implemented, but anyhow, so that is also one. In addition to that also, that is National Professional Standard for Teachers, that is NPST, already developed by NCT. Lead teacher, profound teacher, beginner teachers, every teacher has to have, that means a professional standard from the beginners to the lead teacher. He has to show. So that is also some policies, some rules, some regulations already found out, even also in the National Mission for Mentoring. That means in the educational institution, they have said that national, from the particular areas, retired persons and a very even a skilled person, we can have a mentor in the educational institution. So मेरा कहने का मतलब है जो in service teachers program में the professional development, continuous professional development करने के लिए online platforms will be available, merit based tenure track system is also available, and vertical mobility is also available, and participation in different activities also it will be initiated. Even we can say that involvement in research and academic contribution, that is also to be provided. Because teacher का professional growth, academic growth required. So that is why उनको has to allow to go for seminar,
allowed to go for conference. इसको हम restrict नहीं कर सकते. That is panel discussion, workshop, symposium, short-term training program. You may arrange as a district level function or state level or national level में ये सब हम लोग को that is why knowledge related to digital technology. That means in all we can say that an inclusive setup, an inclusive teacher is the need of the hour. That has been reflected in the national education policy very holistically. So we have to give autonomy. We have to give academic leadership. So that is why. So that national in the process. It is in the process that national mission for mentoring. A pool of outstanding senior or retired faculty will be available. But how to engage them? There should not be class of interest. Suppose a teacher, retired teacher from your own school where we are working, that means retired. He has been invited to give a. So there should not be a struggle between the two existing teachers and retired teacher. One should not. So we have to be very amicable. So that because only one goal in our own mind: quality, affordability, accountability, equality, access. ये जो 5 word है, access and equality, quality, accountability and affordability. That is the prime goal of national education policy. That vision has to be realized. So that is why interpersonal skills given emphasis. That is every teacher that interpersonal skills, communication, teamwork, that is to be also initiated among the teachers community. Intrapersonal skills, that is how to discuss with others. That means within itself, interpersonal, between, how to communicate one to another. That has been initiated in this national education policy. Even in the national education policy, 2022 में teacher को globalization, that is global citizenship skills, has to be embraced. They have to know about, that means global competency, and they have to know about, that means entrepreneurship skills. Sometimes even we can say that we can say that all the things that in the policy, these transversal competencies has to be initiated. That is the need of. So friends, what I want to say is that in a very small brief, that means a point, that how can we bring quality, how to ensure quality, how to develop quality, how to develop problem solving skills, how to develop, that means critical thinking among the students. These are all essential requirement of the school education. And teacher pedagogy, teacher education, and teacher professional, as well as the officials, all of us have the joint responsibility. And that has been emphasized in this policy very vehemently. So just I have to stop here because my other friends, respected colleagues, Professor Senapati is there. So I will stop it here. And what sir will be speaking, I am available. Let us hope that in this small, that new policy, our mission, our goal, our development of our nation, development of our children, development of our profession, development of our, that means states, everything can be ensured. So we are all responsible for that. We the officials, we the teachers, we the monitoring persons, all of us have the joint responsibility. So all of us have to take a pledge that love children, love teaching, bring development, have quality in the system itself. With these few words, just I will stop it here, and I must be very much grateful, and I will be listening our respected Senapati sir, and other things sir will be talking. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you very much. Hello? Hello? Anybody is listening? So, my friend, Jesse, friend. जी सर, आपकी आवाज आ रही है. Okay. Then you just request Senapati sir to give some ideas. जी सर. Okay. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका.
अब मैं प्रोफेसर श्री सेनापति सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर हम लोगों को आज के इस संबंधित विषय पर हमारा मार्गदर्शन करना चाहेंगे। Thank you very much for your kind invitation. Really very happy to be a part of this program. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आज NEP 2020 का ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। Though we have completed, I think there is some noise. Should I start? यस सर, सॉरी थोड़ा सा एक पार्टिसिपेंट का ऑन था, मैंने म्यूट कर दिया सर। Okay. आप स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी सर। Thank you. Really, this is a good initiative by SCRT Jharkhand. I would like to thank the authorities for this nice initiative, and I'm also happy that we are going to discuss something on NEP 2020. My colleague, my friend, Professor Ponda has nicely presented his view, and he has already given the overall picture of this NEP 2020. I would like to highlight some specific things. सर, पहले हम सबको मालूम है कि हम अभी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। The process of implementation has already been started, and we have already developed NCF for early childhood education and care that has already been released, and other 3 NCF for school education, for teacher education, and for adult education are in the process. I think shortly these NCF documents will be released, and accordingly will bring about change in our curriculum syllabus, and it will be implemented in school education properly. Before starting my deliberation, I would like to highlight the vision of this policy. हम सब लोग को मालूम है पॉलिसी क्या है। अभी हम पॉलिसी के बारे में पंडा जी विस्तार से आप लोग को बताए कि ये जो पॉलिसी अभी नया, ये जैसे तो थर्ड पॉलिसी आफ्टर 34 years, because 86 policy was there, that was the second, and first was 68, and this is the third policy, first policy of this 21st century, and we are expecting a lot, and we are hopeful if this policy is implemented, then definitely it will bring about a change in that education system, not only in school education but higher education, teacher education, vocational education, technical education. So ये हमारा जो expectation है। तो पहले ये vision के बारे में हम we should be clear, हमको what are the expectation, what is the vision of this policy. Vision आप देखेंगे, जो vision का बात हम कर रहे हैं, तो focus of this policy is on Indian ethos. हमको क्यों इतना फोकस देना पड़ेगा इंडियन ethos? Because we all know what we are doing and what problem we are facing in our society, and we are mostly following Western culture, and our children are not familiar with our culture, not connected to their roots. इसलिए ये जो पहला आप देखेंगे vision में, that we should help our children to be connected to their roots. Focus should be on Indian ethos. हमारा बच्चे लोग को जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कृति है, मूल्यबोध है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये जो फोकस है, ये क्योंकि by doing this, what is expected, if we can connect our children to their roots, then definitely we can create a very equitable, vibrant knowledge society. That is the expectation. Because we all know, because Jharkhand is a state where more tribal population is there, and Odisha is also state more tribal population. We have children who are coming from rural areas, from tribal area, from slum, from disadvantaged group, even Divyang children
And we should take care of these children because this is our moral responsibility. That is why policy is putting a lot of emphasis on Indian ethos, Indian culture, Indian value system. क्योंकि ये हमारा कल्चर में है, संस्कृति में है. ये हम हमेशा बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम. ये जो कल्चर है, ये हमारा जो अभी थ्योरी में आ गया है, क्योंकि इन प्रैक्टिस our joint family systems are vanishing and we are self-centered. There's a lot of change. And now this policy expects a lot. That is why the first focus is on Indian ethos. And creating by doing that, what we can do, we can create a very equitable, vibrant knowledge society where all categories of children will be benefited and they will get a right type of education. Second thing, there is a lot of crime in our society. And there is a lot of discrimination in our society. We are living in a democratic country and there is a lot of diversity in our country. ये जो diversity हम सबको मालूम है, but that is our strength. We have different language, different culture, different tradition, and even religion. So, but that is our strength. Still, we all are united. But what problem we are facing? That we all are conscious of our rights. We are fighting for our rights, but we are not conscious of our duty and responsibility. That is why, if you see the vision of this policy, it puts a lot of emphasis on development of fundamental duties and constitutional values. That means respect for fundamental duties and constitutional values. So that what we can do, we can create a society where our children, that particularly that they will be conscious of their duties. If we can make our children conscious of their duties and responsibility, then they will not fight for the rights in future. And we'll have a very equitable society and we can achieve everything and there will be fellow feeling, brotherhood, everything will be there. That is why you see in this policy, a lot of emphasis on development of fundamental duties. That means we have to promote fundamental duties and constitutional values. That is the second thing. The third one, so we are talking about sustainable development. हम बार-बार sustainable development का बात कर रहे हैं. India is a signatory. By 2030, we have to achieve this goal 4 of sustainable development. And this policy has taken care of that. ये पॉलिसी में आप देखेंगे जो विजन में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का बात कर रहे हैं और इसका साथ ग्लोबल सिटीजनशिप का बात कर रहे हैं. Ultimately, because since we are in 21st century, we cannot live in alone, and we are dependent on other countries, and we should know, our children should know what is happening in other countries. They should understand their culture. Because we have already, all the time we say Sarve Bhavantu Sukhina, Vasudhaiva Kutumbakam. So that is why now it is high time that we should promote this global citizenship and sustainable development. And that will bring about a change. That ultimately what we want. Ultimately we want our children should be good citizens of this country. And children should be good human beings and also they should be global citizens. If we can do this through our education system by providing right type of education, then we can really implement this policy. To implement this policy effectively, we have to keep in mind that we are going to prepare good citizen for this country. We are going to prepare good human being and we are going to prepare global citizen. This is the expectation of this policy. This is there in the vision of this policy. So keeping in view this vision, when we are going to implement this policy, particularly in school education, because आज जितना लोग ये प्रोग्राम में participate कर रहे हैं, all are the responsible persons are responsible for the education system of the Jharkhand. Because if we all willingly, that means we accept that we have to bring about a change, then we can bring about a change. Because we are responsible persons sitting here. Because all the administrator, the education administrator, the diet faculty, SCRT faculty, and all senior officials are here. So I think it is in our hand. If we will try to bring about change, we can bring about a change. That is why now we have to see that what we can do and what how we can bring about change.
And what is the current scenario that we all know? Pandaji has already highlighted, and that Professor Panda has highlighted many things. The current scenario, we know that we now currently we have 10+2 pattern of education, but now what is expected? We are going to have 15 years of schooling, 5 years of foundational stage. With a lot of focus on development of this. That particular focus on early childhood education and care, because maximum brain development, around 85% of brain development takes place during this period. That is the most important thing. That is why now we have already got the curriculum framework. Now we are preparing the textbooks, and very shortly these textbooks are going to be released, and foundation stage that we can implement it in the foundation stage. And what is expected? It is अभी जितना foundational stage का हम बात कर रहे हैं, practically क्या हो रहा है in private schools? We are running this. Most of the private schools are running this preschool program. What we know, we have also conducted some studies. What they normally do, they try to extend the class 1 to preschool, but that is not the purpose of this preschool. Purpose of preschool is to provide them right type of education, so that there will be holistic development. But the focus of this policy is on holistic development, socio-emotional development. So that is why this stage is very, very important. We are not going to have some textbook for the early stage at preschool. We don't prescribe any textbook. NCERT prescribe textbook from class 1 to 12, but we don't prescribe textbook for the preschool. Because preschool, that means it will be full of activities. They let them participate in different activities, let them share. And these activities will help them to develop their socio-personal qualities. That is most important. That is why we are putting a lot of emphasis on this preschool education. The second, then when they will go to preparatory stage as a teacher and administrator, we have to see what is new in it, because it is already there in our system also. Only the 3 years preschool will be added to class 1 and 2. That will be the foundation stage. But now we have also class 3, 4, 5. What is new? जो नया क्या है वो बात हम कर रहे हैं. Actually, you find what policy is expecting. A policy is expecting a pedagogical change, a pedagogical shift. That means that there should be more collaboration, more sharing, more participation. Let children participate and share their experiences. They let them conduct different activities. वो different activities खुद करेंगे, खुद सीखेंगे. They will get opportunity to exhibit their talents. So that is most important. That is why we have to understand what is our role and responsibility. That means अभी हम क्या कर रहे हैं? Now we are helping our children to secure good mark in exam. How they will secure good mark in exam? That is our concern. कैसे ज़्यादा number लाएंगे exam में? वो concern है, क्योंकि it is content based. लेकिन अभी जो शिफ्ट है, जो आप पॉलिसी में पंडा जी भी बताए, ये पॉलिसी में नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी स्किल्स. अभी नाउ और करिकुलम इज गोइंग टू बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, स्किल बेस्ड, and they will learn many things, that they will perform many things, they will exhibit their talent, they will get opportunity to share their experience. And as a teacher, as an administrator, we can bring about this change. Without investing a lot, we can bring about the ability only through teacher, by providing right type of training to our teachers, by bringing out change in their mindset, in their attitude. We can implement this in our classroom, and that pedagogical shift is required. Let children perform, let children exhibit, let children create, let children innovate, so that we can bring about change in our classroom process. That is our expectation. Then the most important thing that I would like to highlight, because India is going to be the youngest country in the world. In next decade, India is going to be the youngest country in the world, and we are going to have large number of सबसे ज़्यादा youth हमारे पास रहेंगे. तो जब ज़्यादा youth रहेंगे तो फिर हमको क्या करना? We have to provide the right type of education. That is why what policy has recommended. You see, for the middle stage, in middle stage you will find the policy is putting a lot of emphasis on vocational education. हम सब लोग को मालूम है what is the current scenario of vocational education. And our vocational, we have a separate stream, vocational stream, that is class 9, 10, 11, 12. And during these 4 years, we give our weightage is 100 hours, 1000 hours.
4 साल में 1000 hours weightage we are giving to vocational education. And if we compare it with the other countries, particularly with Korea and German, you will find in India only 5% of students are coming through formal vocational education. And whereas in Korea it is 95%, in Germany it is 75%, in USA it is 52%. And what is the problem? We look down vocational education. हम जब पॉलिसी का बात करें, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का बात करें, तो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. वी शुड नॉट लुक डाउन वोकेशनल. अब जितना डेवलप कंट्री देखिए, दे आर वेरी स्ट्रांग इन वोकेशनल एजुकेशन. देयर चिल्ड्रन आर हैविंग डिफरेंट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. But our children, that means even after graduation, even after getting the technical degree, they are unemployable because they don't have the required skills. उनके पास जितना जो skill चाहिए वो skill नहीं है. That is why what we have to do now, we have to orient our children from the beginning. On policy का जो बात आप देखेंगे जो for this middle stage, that now we are going to introduce vocational education from class 6 onwards. Class 6 से vocational education introduce होगा. Or children will be oriented to different vocations, what is available in the locality. Not only they will acquire the skills, but they will develop the dignity of labor. जो अभी हम जो लुक डाउन करते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम छोटा काम है, ये वोकेशनल एजुकेशन कौन पढ़ेगा, जो जिसको कुछ नहीं आता है. तो ये जो माइंड सेट हमको चेंज करना पड़ेगा. ये पॉलिसी में इसलिए वोकेशनल एजुकेशन इज गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन. दैट विल बी नो सेपरेट स्ट्रीम. जब सेपरेट स्ट्रीम नहीं होगा, कंपल्सरी होगा फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू एक्वायर मास्टरी ओवर एटलीस्ट वन वोकेशन. एक वोकेशन का ऊपर मास्टरी लाना पड़ेगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ स्कूल एजुकेशन. ये जो चेंज आने वाला है, अभी जो करिकुलम फ्रेमवर्क प्रोसेस में है, फाइनल होने के बाद जो वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेटेड होगा, इसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा. क्योंकि वी नीड सेपरेट टीचर्स. Though we may not have separate teacher in the class 6, but the general teachers who are teaching, they should be also oriented on this vocational education, because they have to orient our young children to different vocations, what is available in the locality. That is why in the policy it has been suggested that 10 days bagless days. Children will come to school without school bag. When they will come to school without school bag, they will visit local community, they will interact with the people and they will learn from the community. Community का जब visit करेंगे, community से सीखेंगे, community expert will visit school, they will also interact with the students, so they will be familiar. Ultimately, we want to strengthen the school community relationship. Unless we strengthen the school community relationship, then we cannot bring about change in our system. Because before Britishers came to India, the community was responsible for it. Community was taking the responsibility. But now, again, time has come. We have to involve our community, and we have to share our experiences with the community, and also what is happening in the community. Our children should know that is most important. That is why we are going to bring about a change in vocational education, and every child, every student has to acquire mastery over at least one vocation before completion of school education. That is another dimension, and that we all are responsible for that. If we can connect our children to their root, that means what is happening in the locality, their culture, their language, their tradition, everything, and also the skills what is available in the local vocation, what is available, then really we can bring about a change and make education more effective. And most important thing, that when children will go to the secondary stage, because we are responsible, we are now preparing curriculum, and curriculum is going to be flexible. And already in the guideline of the policy, it is there that there will be no hard separation. हम हार्ड सेपरेशन देखना, हार्ड सेपरेशन मतलब अभी जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स अलग अलग पूरा वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम नहीं रहेगा. देयर विल लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड कोई स्टूडेंट चाहेगा कुछ पढ़ने के लिए, अब उनका चॉइस का हिसाब से तो वो ले सकता है. क्यों ऐसे बात हम करने जा रहे हैं? अब देखेंगे जो लर्निंग थ्योरी में भी हम बात करते हैं, अभी मल्टीपल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं, अभी मल्टीपल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्कूल सिस्टम में ओनली लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को प्रमोट करते हैं. क्यों हो रहा है? क्योंकि आवर सिस्टम इज वी हैव वेरी वाटर टाइट कंपार्टमेंट सिस्टम. दैट मीन्स नो चेंज, इट इज वेरी रिजिड.
That is why we are unable to provide education to our children as per their aptitude and as per their need and as per their requirement. किसी को कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ना है वो प्रोविजन नहीं है. साइंस का साथ कोई ह्यूमैनिटीज कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है कि आर्ट्स स्टूडेंट कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उनका चॉइस है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड का हिसाब से वो हम नहीं दे पाते हैं. दो वी से इन थ्योरी दैट वी हैव टू प्रमोट मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि कोई चाइल्ड अच्छा नहीं करता है मैथमेटिक्स से, वी शुड नॉट लेबल दैट चाइल्ड डॉल. We should rather see what other ability the child is having. Child का पास और क्या है, what the child can do. So that we have to explore. That is known as the strength model. In modern learning theory, हम strength model का बात कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि we only all the time will find out, will follow the deficit model, what our children do not know, what they cannot do. Rather, now time has come, we should find out what our children can do, what ability they have, what potentiality they have, and what is their strength, not what is their weakness. Once we identify what is their strength, then accordingly we can provide them education, and that is why we have to make our system more flexible. They will study the subject as per their aptitude, as per their interest, and that will really bring about change in our teaching learning process. That is why in secondary stage it is going to be very flexible, and really our children will be benefited, and we are going to follow the strength model, not that deficit model. We are not going to find out the weakness of our children, what they cannot do. By doing that, what we label the child, you are dull, you are poor in mathematics. That means by doing that, by saying so, what we are doing, we are actually, it is affecting the self-esteem, self-confidence of the child. So that is why now the time has come, we should understand the learning theory, and we should promote the strength. Then we identify the strength, and accordingly we should provide education. So that is most important, and there will be no hard separation between curricular, co-curricular and extracurricular. क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, हमारा फोकस टू सिक्योर गुड मार्क इन एग्जाम. दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द स्कूल सब्जेक्ट्स, and now we are shifting our focus. No, the teaching these subjects is important. Along with that, they should develop the socio-personal qualities. That is most important. If we cannot help our children to develop their socio-personal qualities, then they cannot be good citizen of this country. That is why we have to make them good citizen, good human being, and we have to develop their socio-personal qualities, fellow feeling, belongingness, cooperation, collaboration. All these we have to develop so that they will be good human being, and that will really bring about a change. And accordingly, we have to make assessment. We have to bring about change in our teaching learning process, particularly in the process of assessment. Now we have to take care of that aspect. We are going to make our secondary education more flexible, and there will be no watertight compartment. And now we are putting a lot of emphasis on multilingualism also, so that children will get opportunity to learn through their language. So all the things we are doing to improve the quality of education. So most important thing that I would like to highlight, because it is something really, if you want for some change, हमको कुछ change लाना है तो हमको पहले assessment में change लाना पड़ेगा. Change लाना है तो assessment में change लाना पड़ेगा, क्योंकि the way we are conducting our test, the way we are assessing, that is not adequate. हम अभी जो assessment करते हैं हमारा स्कूल में, क्या assess करते हैं? We assess their performance in different school subjects. हमारे पास हमारा स्कूल में प्रोग्रेस कार्ड है, और प्रोग्रेस कार्ड में हम क्या करते हैं ना, बच्चे जो चिल्ड्रन का जो अचीवमेंट है, व्हाट इज देयर अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, इसको हम रिकॉर्ड करके पेरेंट्स के पास देते थे, पेरेंट का सिग्नेचर लेते हैं. सो इफ वी कंटिन्यू डूइंग लाइक दिस, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वही जो सिस्टम था वही चले. हम नया पॉलिसी का बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं, नया पॉलिसी को रियली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमको असेसमेंट में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि हम करिकुलम इज गोइंग टू बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, व्हाट पॉलिसी हैज सजेस्टेड, एंड व्हेन इट विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड. जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, जब हम स्किल कॉम्पिटेंसी का बात कर रहे हैं, तो कंटेंट लोड कम हो जाएगा. कंटेंट लोड जब कम होगा तो बच्चे क्या करेंगे, दे विल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, they will participate in different activities, they will collaborate
and they will share their experiences with their friends, and they will do something. We are going to make them autonomous learner, and our role, teacher role, is going to change, because we'll facilitate learning, will not deliver lecture, and assessment में भी change आएगा. तो and pedagogy जो है ना, अभी assessment का जो हम बात कर रहे हैं, assessment is not something separate from teaching learning. Earlier हमारा जो traditional learning theory में assessment was something separate from teaching learning, but now in modern theory assessment is an integral part of teaching learning. हम जो behavioristic model follow करते थे, हमारा जो focus था on product मतलब content mastery, कितना अच्छा नंबर लाएंगे. But now our focus has been changed. Our focus has been shifted from product to process. It is not important what our children learning. Curriculum में क्या है, क्या पढ़ते हैं, that is not important. How they are learning, that is more important. वो कैसे पढ़ते हैं और क्या करते हैं. Are they participating in different activities? Are they sharing their experiences with others? Are they getting opportunity to exhibit their talents? So that is most. Are they getting opportunity to create something new? Are they getting opportunity to innovate something? So if they are not getting opportunity to do all these, then there is something wrong in our system. And unless we introduce this change in our teaching learning process, we cannot make our children more creative. We cannot develop their critical thinking. We cannot develop their problem solving ability. We cannot develop their communication skills, what is required in 21st century. हम जब 21st century learning skill का बात कर रहे हैं, problem solving, critical thinking, communication skill, creativity का बात कर रहे हैं, ये कैसे possible होगा जब हम classroom process में change लाएंगे. curriculum अच्छा बना देंगे, टेक्स्ट बुक अच्छा हो जाएगा. अभी भी टेक्स्ट बुक अच्छा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो वर्क्स आइटम है, कुछ एक्टिविटीज का बात हम करें, वो क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. जो कंटेंट है वो कंटेंट ट्रांजैक्ट होता है, एक्टिविटीज का क्योंकि ये पर्पस क्या था, एक्टिविटीज सजेस्ट लेट चिल्ड्रन परफॉर्म समथिंग. बट नाउ इफ रियली वी वांट a change in our school education, then we have to bring about change not only in our curriculum but in the pedagogical process. What policy has recommended? Pandya ji also highlighted this one, that experiential learning का बात कर रहे थे, toy based pedagogy का बात कर रहे हैं, तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का बात हम कर रहे हैं, और स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का बात कर रहे हैं, आईसीटी इंटीग्रेटेड लर्निंग का बात कर रहे हैं. ये सब क्यों करना चाहते हैं? जस्ट टू मेक आवर चिल्ड्रन मोर क्रिएटिव, just to develop their problem solving ability, just to develop their critical thinking and their communication skills, so that they will be good citizen, good human being and global citizen. That is the goal. Because what is happening in other country also we have to follow, and we have to respect our own culture, old tradition, own value system. दोनों को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा. तो इसीलिए ये जो क्लासरूम प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा, पेडागोजिकल प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा. इसके लिए हमको ज़्यादा पैसा का जरूरत नहीं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए. हम हमारा टीचर लोग को अच्छा ट्रेनिंग दे पाएंगे, उनको मोटिवेट कर पाएंगे. जैसे हम निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया था, जो ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ऑनलाइन हो गया. ये जो जहाँ हुआ है, जहाँ वो टीचर को आप लोग पूछिए, तो what are their experience? We have to bring about change in their mindset. We have to motivate them, because they are the real person who are going to implement this policy. Unless we empower our teacher, we cannot do this. And that is why we have to empower our teacher, and we have to bring about change in our classroom process, because process is more important than product. If process is good, then product will be automatically good. That is why all the in policy it has been mentioned. It is not important what they are learning, but how they are learning. That is, they let them collaborate, share, and create something, develop their potentiality. And that will be possible if we can bring about change in our teaching learning process, if we can empower our teacher. And that's the pedagogical thing that we need. And the most important, that assessment, what we are talking, what policy has recommended, what we can do in our classroom without investing a lot. What we are doing practically, we are assessing the performance of our students. हम assessment कब करते हैं? Year end में करते हैं. Year end में करके हमारा judgment देते हैं, बोलते हैं कि ये तुम अच्छा है, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, इतना परसेंटेज है. परसेंटेज तो बहुत अच्छा आता है आजकल, लेकिन जो असेसमेंट हम करते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट.
That is in between, our in system also, in between we conduct some assessment, we call it formative assessment. जो after 3 months, 2 months वो करते हैं, वो feedback भी देते हैं, remedial coaching भी देते हैं to improve their standards so that they can acquire mastery over the competency. लेकिन policy में जो बात हो रहा है कि we have to involve our students in the process of assessment. Now everything is done by the teacher. अभी आप जितना असेसमेंट है हम टीचर लोग करते हैं, हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, हम एडमिनिस्टर करते हैं, टेस्ट करते हैं और उनको बच्चे लोग को बता देते हैं कि आपका इसमें इसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं किया, फिर जो पुअर है उनको भी रिमेडियल मेजर देते हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट. व्हाट पॉलिसी हैज सजेस्टेड दैट वी हैव टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. ये असेसमेंट में देयर विल बी सेल्फ असेसमेंट, बच्चे लेट देम असेस देयर परफॉर्मेंस, and there will be peer assessment, let their friends assess their performance, and there will be teacher assessment. Even parents can also be involved in this process. And we are going to make it very transparent. We are going to make it 360-degree. And we are putting emphasis on 3 types of assessment: assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. We all who are sitting here, because we all are involved in this education system, and we know what is assessment of learning, that we do at the end of the session just to give our judgment to assess their performance. And also we know what is assessment for learning, that we do in between to give them feedback. But now policy is putting a lot of emphasis on assessment as learning. As learning, when we are talking about assessment as learning, that means let children learn and also be assessed. That means it is a continuous process. We will not wait for 3 months to give them feedback. Let them learn and immediately we can give them feedback. That facility we have to create. And if we can create this facility, immediately we can give feedback to our students, then they will get opportunity to improve. That is why we have to introduce this self-assessment, and we have to introduce this peer assessment, and we have to introduce the teacher assessment is already there. And our focus will be this assessment as learning. Let children reflect on their own learning. Their children are not getting opportunity to reflect. Reflection नहीं हो रहा है. उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. हम 3 महीने के बाद उनको बताते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस इसमें इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है. Why not from the beginning? Why not in the class? If we don't have time to do that, let this feedback let them get this feedback from their peer group, from the friends. Let them assess their performance. So let us make it more transparent. So that is the most, that because this is the key. This will bring about change in our teaching learning process. That is why what we have to do, we have to involve students, and not only will depend on test, because test what we are doing, we are assessing. Test are authentic tool for assessment. And when we are doing this formative assessment, we are using test. When we are doing summative assessment, we are using test. But what we are measuring? We are measuring their knowledge in different school subjects. That we are doing, that is the requirement. But now what policy has recommended? Policy in the vision that we have to promote fundamental duties. And to promote fundamental duties, we have to give due weightage to this affective domain. And we have to also measure their performance in affective domain. And their performance in affective domain cannot be measured by the test. By administering different tests, we cannot measure their performance in academic domain, how they are sharing their experiences with the others, how they're participating, and how they're taking initiative, and what type of leadership quality they have, what type of other abilities they have, potentialities, it may be in sports, in music, in dance, in theater, and in other areas, maybe in literary. So all these, what we can do, we have to use some non-testing technique. That is why in policy it has been highlighted. We have to promote this. We have to prepare a holistic progress card, and holistic progress card will take care of everything. That means not only the cognitive, what we are doing, that is already there, but it will take care of the affective domain, psychomotor domain. All that means all the aspects, all the dimensions of the personality will be reflected in the holistic progress card. If we can make this progress card holistic, if we give due weightage to cognitive, affective, and psychomotor domain, then there will be holistic development. Really, if you want a holistic development, then we have to bring about change in our assessment process. We have to introduce holistic assessment, and we have to prepare holistic progress card.
Along with testing technique, we have to use non-testing technique. Non-testing technique matlab kya hai? We have to use rubric. Rubric is are very popular now. Most of the schools are using, and in other countries also they are using. And when we prepare rubric, we'll involve students, and they should know what are the criteria and how they are going to be assessed. हम कैसे assessment करेंगे? इसका criteria बच्चे लोग को पहले से पता होना चाहिए. If they know the criteria, they will prepare accordingly. And we finalize the criteria in consultation with the students. हमको हम जो project देते हैं करने के लिए, when we are going to assess the project, how do we assess the project? We go through the project and on our own we give some mark. And when we give some mark, we of course we take into account the language and we see the content, we see the organization of the content, we see illustration, and the same thing we can do with the help of students. We can ask them, you tell what are the criteria and how you want to be assessed. What criteria we should follow for this assessment, and let them say that the language is one part, content, organization of content is another part, and similarly illustration is another part. So like this, we can identify the criteria in consultation with the students, fix the criteria, then we can fix the grading. That जैसे हम हमारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, जैसे ऐसे भी हम कर सकते हैं कि यस वेरी गुड वेरी गुड एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग, लाइक दिस we can fix some grade that सबसे अच्छा हुआ, all the criteria fulfill किया, then we can say outstanding. Below that we can say excellent, then very good, or it needs improvement. Like this, we can identify the criteria in consultation with the students, and we can then go for grading, and our rubric will be ready and it is available in net. If you type rubric, you will be knowing that. I think most of you are familiar, it is not something new. And policy is highlighting on this because we have to use some subjective tools for the assessment along with the objective tool. Test is objective tools, we all accept, because before preparing a test, we see the reliability, validity, other things, many other criteria. It is scientific, no doubt about that. But using test, we cannot measure all the domains of the personality. That is why we have to use some other techniques. That is why it has been recommended that we should use rubrics. And by using rubrics, we can assess all the dimension of the personality, and that will be an integral part of assessment. Then our holistic progress card will be used, and that will take care of all the domains. So by doing this, what we are going to bring about change in entire teaching learning process. If we can implement change in the process of assessment, then we can bring about change in entire teaching learning system, that means teaching learning process. Because now assessment is an integral part of teaching learning. Earlier it was separate from teaching learning. Now it is an integral part of teaching learning, because now we are following this constructivist approach. And in constructivist approach, assessment is an integral part of pedagogy. Pedagogy, assessment, curriculum, all are interrelated, integrated. So we have to see from a holistic point of view. And that we can implement by providing right type of training to our teachers. We don't need much fund for this. And if we want, we can orient our teachers properly, and we can tell them these are the things we have to do. And our job is not just to cover the syllabus. Our job is to help our students to become good human beings. To make them good human beings, we have to assess the other dimensions, other domain of the personality, what is required to become a good human being. If our school will give weightage to development of socio-personal qualities, then definitely parents will also take care of this. Practically what happens, in sometimes during game period also we try to teach some subject just to cover the syllabus, because we think our job is just to cover the syllabus. Let these children play, let them participate in different activities, let them get opportunity to develop their potentiality, so that really they will become good human being and good citizen and global citizen. That is most important. That is why if really we want to implement this policy, then what we can do, we have to bring about change in the process of assessment. That was my focus. The second part, that is the technology. What we are doing now, we are using technology. In policy also, it has been recommended that ICT integrated pedagogy.
in policy, it is there in experiential learning, then ICT integrated pedagogy. And how we are using ICT? Because now we all are familiar with ICT because during COVID period, we have taken advantage of this. In NCRT also, we developed this alternative academic calendar because when children were at home, we thought that how to provide education to our children because they are not in a position to come to school and teachers also cannot visit them and they are with their parents. So now we thought of a plan that you might be knowing that alternative calendar NCRT developed during that COVID period, that we can use our smartphone and we can use our laptop and that at least those who are having this facility, ICT facility, internet, everything, let them, we came out with the learning outcome. We know that the NCRT has developed the learning outcome. And keeping in view the learning outcome, we prepared a mapping, but because different portals are available, NCRT has this NROER and ePathshala. Then now Diksha platform has come, and a lot of materials are available. But it is difficult for children to find out which material is the authentic one and which material is required for which class and which subject. So that we did that mapping, keeping in view the learning outcome. Then teachers, with the help of that material, the teachers could orient the parents. They could provide some input. The CBSE schools followed this model and they provided some information, some guidelines to the parents. Then parents using the available resources at home, they created a very good learning environment and the children took advantage of this. But my point is that with technology we can do a lot. But the question is how we are using technology. In our schools, we should not use technology just to convert the printed materials into digital mode. What is available in the textbook, same thing should not be presented in digital mode. That is not the use of technology. And when we're talking about the use of technology in ICT, that means in NEP 2020, lot of focus on ICT integrated learning. That means let our children use technology as a tool for better collaboration, for better sharing. Because in learning theory, we know if there is more social interaction, then there is better learning. ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा अच्छा लर्निंग होगा. ज्यादा सोशल इंटरेक्शन कब होगा? जब when our children will get opportunity to talk, when they will work in group, when they will get opportunity to share their experiences with others. And without technology, they can work in group, that is that will be offline and that the inside the classroom. But if we provide them technology, then using technology, our children can collaborate with others. They can share their experiences with others. They can use blog. They can express their view. They can develop their creativity, and say they can use social network services to share the experiences with others. And that collaboration is required. And that collaboration will help our children to develop their potentialities. They can express their feelings, express their views, and that will help in the development of their communication skills, creativity, etc. That is why we should use technology as a tool to facilitate learning. It is not just one medium that we are using. That in COVID period we have used as a medium. That is okay. But similarly, we should use different ICT tools, and we should empower our students how to use different ICT tools to share their experiences, to create, to prepare a blog, or to develop their communication skills. So that will really bring about a change in teaching learning process. That is why earlier, when our learning theory, it was based on behavioristic pedagogy, we are using this technology, but purpose was just to learn from the technology, because everything we loaded with the computer, and we are learning from computer, the program learning, the computer assisted learning, step by step, because our purpose was to have content mastery. And we give a small component of the content to our children. Then we ask some question. If they give correct answer, then we allow them to go to next. But by doing that, what we are helping children to have mastery over the content, because our purpose was content mastery and it was most product oriented. But now it is process oriented. Now we don't want only content mastery. They should know the content. They should learn the content, but using that content as a medium
let them develop their competency, their problem solving ability, critical thinking, creativity, communication skill. So from keeping in view that we should use technology, so now that is why we say now we are learning with technology. When they are using different learning tools, certain ICT tools, they are using it to develop their creativity, their communication skills. So that is why how to use technology, that is most important, and that we should know, and our teachers should know. If they know how to use technology, then definitely it will bring about a change. The most important thing that is why we say that there should be proper integration of content, pedagogy, and technology. If there is proper integration, and if our teacher understand what is the interrelationship between content and pedagogy, and technology and content and technology and pedagogy, then that will help them to bring about a change in the teaching learning process. So that is most important. That is why policy is putting a lot of emphasis on this technology, use of technology, particularly keeping in view the latest pedagogy, because when there is a conflict between pedagogy and technology, all the time you'll see pedagogy dominates technology. And keeping in view the pedagogy, what do you want? We want more social interaction, better collaboration. That keeping in view that we should use technology so that our student will be more creative, more innovative. So these two things are most important to implement this policy, because we now everybody is having smartphone, and our children are using a laptop, etc. Even those who are not having all these, for them also we should think of something. That is why PM E-Vidya has come, so at least those who are not having the basic facility, they can watch the television. Where internet facility not there, they can watch the television, and we are coming out with more channels, and they will take advantage of it. But those who are having the facility, let them use it properly. Just we should not use it just to transact the content, but rather they should use these tools just to develop their potentialities, and that should help them to become more creative and more innovative. These are the most important things I wanted to highlight on this assessment and pedagogy. But one more thing that we all know, that just I would like to highlight, and then we'll close it, then we can have some question and answer. So one most important thing, now we have this National Achievement Survey. You might have seen the result. We conducted this National Achievement Survey in 2017. Another survey was conducted in 2021. And if you see the result of both the survey, it is almost same. You won't find much difference. And these surveys are conducted on class 3, 5, and class 8 and class 10, because you all are involved, because stay SCRTs and all faculties are involved. But just why I want to bring it to your notice, because we are talking about the competency. Policy put a lot of emphasis on competencies. But this test survey we conduct, National Achievement Survey we conduct, just to know the health of our system. And if we ask me is to know that you know the result, just I want to highlight. हमने कहा भाई इसके ऑफिशियल है, इस पर जाके अपना देखते रहा करें. What we want actually, that if you see the result of class 10, class 8, and class 5 and class 3, that just I will give you the average score. Average score in class 10 is 38. That means 38%. Average score in class 10 is 38, class 8 is 42, and class 5 it is 49, and in class 3 it is 59. That is, this survey was conducted on 36 lakhs children, 3.6 million children, and this is the result. The average score, why I'm pointing out, the average score in class 3 is 59. And in 17, it was around 60. So we can say 60, 50, then 42, and 38. And if you compare the result of our students in board exam, our students secure 90%, 100%, 95%. But why they are securing 38% in the National Achievement Survey when we conducted? And this survey is not only on government schools. This survey is conducted. This has been for the first time. It has been conducted on not only by taking into all category school into consideration. That means our CBSE schools are there. Even our Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas are there, and the private schools are also there. And if the
average score is 38 and board exam they are securing 90, 95, 100, then why this gap? What is the problem? It is clear that there is something wrong in our system. And our assessment, particularly what we are doing in the board exam, we are assessing the knowledge. But this survey, that it is based on the learning outcome, what we have developed. NCERT developed learning outcome in 17, then 19 for the 9, 10. This is based on these learning outcomes. And when we are assessing their competencies and skills, their performance is very poor. And many research studies you will find it shows that Indian students excel when question comes from the textbook, because our board of exam questions are coming from the textbook. And our Indian students perform miserably when the questions are relating to understanding, application, and out of textbooks. So that's the way some international study also show this. So that is why now time has come. We have to think that what we should do. We should develop, whether we should help our student to develop their content mastery, and we should be happy with their knowledge, what are the score what they have secured in board exam, or we should look into the achievement survey and we should see why our children are securing only 38%. The average score is 38% in class 10, because we had taken sample from the all over the country. It is not the one or students and all categories of school. And if this is 38, then now time has come. We have to introspect. We have to retrospect. What is the problem with us, and what changes we have to bring about in our pedagogy and in our curriculum, in our assessment. That is the most important. In vision document, in vision also it has mentioned, by providing right type of curriculum, right type of pedagogy, we can bring about change among the students. We can prepare them for holistic development, attitudinal change, and change in their mindset. And we can make them conscious of their duties and responsibility. So everything depends on our curriculum, pedagogy, and assessment. So now time has come. Now we are going to implement NEP 2020 in our country. All the states are coming out with their plan, because once the national curriculum framework is ready, you will come out with your state curriculum framework and textbooks. So this is a very challenging time now we have, and it is our responsibility. If we want, we can bring about change. It is not that we have to do, because we really want to do. That is the most important. If willingly we want to do something, then we can achieve the goal. दिल से काम करेंगे तो सब हो पाएगा, नहीं तो it will be difficult. And the way we are running our system, it will run like this, and ultimately our children will be sufferer, and we will be loser, and we cannot go ahead. So it is now up to us and how we want to implement this policy. Policy is very good, excellent, the recommendations are very good, and now how we are implementing, it is up to us. And if we can prepare right type of teacher and give them the responsibility, and they can implement this policy at the grassroots, and we can enjoy the fruit. So thank you very much for giving me this opportunity. Now it is open. If you have any question, any query, etc., we can have some discussion. And thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे प्रतिभागी जो भी जुड़े हुए हैं, अगर आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे और पूछ सकते हैं। मुझे लगता है एवरीथिंग इज क्लियर। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? सर लगता है किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, तो
Somebody should initiate discussion from any diet or anyone. Somebody should ask something so that we'll be very happy. सरल एवं सुगम तरीके इसके विभिन्न पहलुओं से हमें अवगत कराया। आशा है कि आज के इस उन्मुखीकरण के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनको एनईपी 2020 की एक समग्र समझ बनी होगी। इस कार्यशाला के क्रियान्वयन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेसीआरटी निदेशक महोदया का एवं आरआई के प्राचार्य का और जेसीआरटी के उपनिदेशक श्री प्रदीप कुमार चौबे सर, श्री बीपी पांडा सर का, श्री ऋषिकेश सेनापति सर का, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें एनईपी 2020 के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया एवं जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए थे उन सभी प्रतिभागियों का भी जिन्होंने ध्यान से सुना और समझा एवं श्रीमती प्रीति मिश्रा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः एक बार। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you.